हेलो वेलकम यू टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। When you look around, you will observe different animals with different structure and forms. As over a million species of animals has been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning systematic position to newly described species. 4.1 Basis of classification. In spite of differences in structure and forms of different animals, there are fundamental features common to various animals in relation to the arrangement of cells, body, symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. Level of organization 4.1.1 sorry. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. They exhibit cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cells. In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. Here the cells performing the same function arrange into tissues, hence is the tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. In animals like annelids, arthropods, mollusks, echinoderms, and chordates, organs have associated to form fungal systems, each system concerned with a specific psychological, physiological function. This pattern is called organ system level of organization. Organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus and hence called incomplete. A digestive system sorry A digestive system has two openings, a complete जो होता है mouth and anus. Similarly, the circulatory system भी दो टाइप के होते हैं, open और closed. Open in which the blood is pumped out of heart and the cell and tissues are directly bathed in it. Closed type in which blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries जो हमारे टाइप में होता है बॉडी में. डायग्राम देख सकते हैं आप, रेडियल सिमेट्री, bilateral symmetry. Symmetry. Animals can be categorized on the basis of symmetry. Sponges are mostly asymmetrical, that is, any plane that passes through the center does not divide them equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. Coelentrates, ctenophores, echinoderms have this kind of body plan. Animals like annelids, arthropods, etc., where the body can be divided into identical left and right half in only one plane, exhibit bilateral symmetry. Diploblastic and triploblastic organization. Animals in which cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals. Example, coelentrates. An undifferentiated layer mesogalia is present in between the ectoderm and the endoderm, showing germinal layers. डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक देख सकते हैं डायग्राम में हम, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोगिलिया है. Those animals in which developing embryos a third germinal layer mesoderm in the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. Platyhelminthes to chordates. सीलोम ये डायग्राम है. सिलोमेट, सूडो, एसिलोमेट. ये फर्स्ट है सिलोमेट, सूडो एंड देन एसिलोमेट. सीलम. Presence or absence of a cavity between the body walls and the gut wall is very important in classification.
The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomates. Example: annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates, and chordates. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called coelom. Mesoderm, scattered pouches में present होते हैं. Example: Aschelminthes. The animals in which the body cavity is absent totally, like in C diagram, body cavity है ही नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Acoelomates. Example: Platyhelminthes. Segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with the serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation. Segmentation. In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is not metamerism. Notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example: Porifera to echinoderms. Classification of animals. Based on common fundamental features as mentioned in previous sections is given. Okay, so ये पूरा diagram दे रखा है. Level of organization, kingdom Animalia, symmetry, body cavity, phylum, cellular, tissue, organ system. Cellular level पे symmetry mostly symmetrical, acelomate, phylum porifera. फिर टिश्यू organ system में radial bilateral symmetry आ गया, acelomate, Coelenterata, Ctenophora. फिर bilateral में without body cavity, with false coelom, with true coelom. ये different नाम है. Broad classification of kingdom Animalia based on common fundamental features. The important characters of the different phyla are described. Phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical animals. These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. The water enters through minute pores, ostia, and the body wall into a central cavity, spongiole, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. Chynocytes or collar cells line the spongiole and the canals. Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made of spicules or spongion fibers. Sexes are not separate. Hermaphrodite होते हैं ये. Eggs and sperms are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. So आप देख सकते हैं cycan, this is Isphonia, third is Spongilla. Cycan, Spongilla, Isphonia. Phylum Coelenterata, Cnidaria. Coelenterata, Cnidaria. They are aquatic, mostly marine, sessile, or free swimming, radially symmetrical animals. The name Cnidaria is derived from the cnidoblast or cnidocytes, which contain the stinging capsule or nematocytes present on the testicles and the body. Cnidoblasts are used for anchorage, defense, and for the capture of prey. Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. They have a central gastrovascular cavity with a single opening, mouth on hypostome. Digestion is
intracellular and the extra intracellular both होते हैं. Some of the cnidarians example corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former is a sessile cylindrical form like hydra, adamsia, etc., whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like urilla or jellyfish. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation. Metagenesis, example, polyps produce medusa asexually and medusa form the polyps sexually or bilia. Example, Physalia, Portuguese man of war, Adamsia sea anemone, Pentula sea pen, Gorgonia sea fan, and Mandrina brain coral. If you look at the diagram, example of Coelenterata indicating outline and the body form, Adulla medusa, Adamsia. Okay. Phylum Ctenophora. Ctenophores, commonly known as sea walnuts or comb jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organism with tissue level of organization. The body bears right 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. Bioluminescence, the property of a living organism to emit light, is well marked in ctenophores. Sexes are not separate, यानी ये भी hermaphrodites हैं. Reproduction take place only by sexual means. Fertilization external होता है with indirect development. Example, Pleurobranchia and Tinoplana. ये example है Ctenophora का, Pleurobranchia का. Okay. Phylum Platyhelminthes. They have dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworms. These are mostly endoparasites found in animals, including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic, and acoelomate animals with organ level of organization. Hook and suckers are present in the parasitic forms. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cell help in osmoregulation excretion. Sexes are not separate. Fertilization internal होता है and development is through many larval stages. Some members like planaria possess high regeneration capacity. Example, tapeworm, liverfluke, fasciola, tinea. Platyhelminthes के example है. Platyhelminthes, tapeworm और liverfluke. Phylum Aschelminthes. Aschelminthes. The body of Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworms. They may be free living, aquatic, terrestrial, or parasitic in plants and animals. Roundworms have organ system level of body organization. They are bilateral symmetrical, triploblastic, and pseudo-coelomate animals. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. And excretory tubes remove body waste from the body cavity through the excretory pores. Sexes are separate. Okay, for first time sexes separate now dioecious. Male female different होते हैं. इन्हें राउंड वॉर्म कहा जाता है. एस्केलमेंथिस का राउंड वॉर्म. ये फीमेल लॉन्गर होती है मेल से और ये बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Fertilization internal and development may be direct. The youngest resembles the adult or indirect. Example, Ascaris, roundworm, Wicheria, Flaria form, and Cyclostoma hookworm. These all worms are responsible for many diseases in humans. Okay. Next is Phylum Annelida. इसका example है Neresis and Herodinaria. They may be aquatic, marine or freshwater, terrestrial, free living, and sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization, bilateral symmetry. They are triploblastic, metamerically segmented,
and coelomate animals. The body surface is distinctly marked out into segments of metamorphs, hence the phylum name Annelida, Latin annulus, little ring. They possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. Aquatic annelids like nurses possess lateral appendages, parapodia, which help in swimming. A closed circulatory system is present. Nephridia, singular nephridium, help in osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia, a singular ganglion connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Neresis, an aquatic form, is dioecious, but the earth form and neresis are monoecious. Reproduction is sexual. अर्थवर्म नेरिसिस जो पैरेटी में होता है, इसका एग्जाम्पल है हेरोडेनिरा, ब्लड सकिंग लीच कहते हैं ना, लीच जौ जिसे हिंदी में दिस एग्जाम्पल. सो अर्थवर्म बिलोंग टू द फाइलम एनिलिडा. Arthropoda, very famous and the largest phylum species present on Earth. Largest phylum animal which includes insect. Over two-thirds of all named species on Earth are arthropods. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented, coelomate animals. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax, and abdomen. They have jointed appendages. Anthros means joint, poda means appendages, पैर जो होता है. Respiratory organs are gills, book lungs, or tracheal system. Circulatory system is of open type. Sensory organs like antenna, eyes, compound and simple. Statocyst or balancing organs are present. Excretion take place of malphigian tubules. They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. And development may be direct or indirect. Example economically important insect होते हैं apis honeybee, Bombyx silkworm, Lessifer lac insect. Vectors होते हैं anopheles, Culex Aedes mosquito जिससे डेंगू और ये सब होता है. Gregarious Locusta locust, living fossil, limbless king crab. सो लोकस्ट आप देख सकते हैं, टिंडा जिसे कहते हैं, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो, बिच्छू, प्रॉन, ये सब ऑर्थोपॉड्स में आता है. फाइलम मोलस्का, एग्जाम्पल मोलस्का पायला जो शंख हम कहते हैं, और ऑक्टोपस. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम मोलस्का, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीनो, फ्रेश वाटर, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सोलोमेट एनिमल्स होते हैं. Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot, and visceral hump. A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called mantle cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like grasping organ for feeding called रेडुला. ये मोस्टली डायोशियस होता है एंड ओविपारस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल पायला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ओयस्टर, सीफिया कटलफिश, लोगिलो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविलफिश, Appalachia sea hare, Dentalium tuskshell, and Chaetophleuria chiton. Next phylum is Echinodermata. Example है Asteris and Ophura. You can say it. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata क्योंकि calcareous होता है इनका outer skeleton. All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radiosymmetrical but larvae are bilateral symmetrical. They are triploblastic and coelomate animals.
Digestive system is complete with the mouth on the lower side and anus on the upper. तो नीचे mouth और lower upper पे anus होता है dorsal side. The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system. Unique feature है distinctive which help in locomotion, capture, transport of food and respiration. An excretory system is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual. Fertilization usually external. Development is direct by free-living larvae. Example: estuaries, starfish, equinox sea urchin, antedon, sea lily, Cucumberia sea cucumber, and Opihora brittle star. Next is phylum Hemichordata. Hemichordata, you can see this diagram: Balanoglossus, collar, trunk, proboscis. Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord. This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, and coelomate animals. The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar, and a long trunk. Circulatory system is of open type. Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. Example: Belanoglossus and Secoglossus. Next is phylum Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of a notochord, a dorsal vent, a hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits. They are bilateral, symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. As you can see in the diagram, chordata characteristic: notochord, nerve cord, post-anal part, gill slit. This is a table with comparison of chordates and non-chordates. Chordates, notochord present; not non-chordates, notochord absent. Chordate central nervous system is dorsal, hollow, and single. Non-chordate central nervous system ventral, solid, and double. Chordate's pharynx perforated by gill slits. Non-chordate gill slits are absent. Heart is ventral in chordates, while heart is dorsal if present in non-chordates. Post-anal part tail is present in chordates, whereas it is absent in non-chordate. Phylum Chordata is divided into three subphyla: Urochordata, Tunicata, Cephalochordata, and Vertebra. This is a diagram of Acidia. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often termed to as protochords. सो जो कॉर्डेट है वो तीन पार्ट में डिवाइड है: यूरोकॉर्डेटा या टूनिकाटा एक ही बात है, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा. एंड जो यूरोकॉर्डेटा है सेफेलोकॉर्डेटा उन्हें मिला के प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है. एंड आर एक्सक्लूसिव मरीन, यानी सिर्फ पानी में पाए जाते हैं. इन यूरोकॉर्डेटा notochord is present only in larval trail, while in cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent through their life. Example: Acidia, Sulfa, Dolilum, Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus, or Lancelet. The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or by bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. It's a very important point. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जो कॉर्डेट्स होते हैं प्रोटोकॉर्ड्स में उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है. और वर्टिब्रेट्स होने के लिए आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होना ज़रूरी है. Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidney for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. The subphylum Vertebra is further divided into following: Agnatha और Gnathostomata, यानी जिनके जॉ लाइक होते हैं एग्नाथा,
और जिनके ग्नैथोस्टोमेटा जिनके जॉ होते हैं उसको डिवाइड किया गया सुपर क्लास पाइसिस और एक टेट्रापोडा। पाइसिस यानी मछली जिनके फिन्स होते हैं, क्लास क्वाड्रियोरिचथाइस और ऑस्टियोथाइस। और टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं, हाथ पैर, जैसे क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, हम आते हैं मैमल्स में। और एगंथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजोन इसका जॉलेस वर्टिब्रा क्योंकि इसमें जॉ नहीं होता। जॉ मतलब जबड़ा। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasite in some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. आफ्टर स्पनिंग यानी जब उनको एग ले करना होता है या फर्टिलाइजेशन करना होता है, विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। तो ये बच्चे स्पनिंग करने के बाद ये मर जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड माइक्सिन हैगफिश। क्लास कॉन्ड्रियोचाइटस। कॉन्ड्रियोचाइटस कौन सा है? ये वाला यहाँ पे जो फिन स्पेयर करता है। Example cartilaginous collodion, very common fish, and pristis. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout life. Gills are separate and without operculum. Gill cover the skin is tough, containing minute placoid scales. The teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous यानी prey करते हैं. Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. Heart is of two chambered, one auricle and one ventricle. Some have electric organs जैसे torpedo होता है और सबके पास poison sting होती है ट्राइगोन. तो टॉर्पिडो किस क्लास में आता है? Chondriochitis. They are cold-blooded poikilothermous animals. That is, they lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In male pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. Examples: Scorpion, dogfish, Pristis, sawfish, Charodon, great white shark, Trichogon, stingray. Next is class Osteochithys. Osteochithys. It includes both marine and non-marine freshwater fishes, with a bony endoskeleton. This body is streamlined. Mouth is mostly terminal. They have 4 pairs of gills which are covered by operculum each side. Skin is covered with clives, cycloid, stenonoid scales. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी. इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें नहीं होते थे. Hat is two chambered, one auricle, one ventricle. They are cold blooded animals, sexes are separate, fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. Example: marine Exozoitus, flying fish, hippocampus, seahorse. Freshwater labio rohu, katla, clarius magur, aquarium beta, fighting fish, and pterophyllum angelfish. क्लास एम्फीबिया, ये भी अगेन बहुत कॉमन है यूजुअली इन डेली लाइफ. जैसे फ्रॉक का डायग्राम है, सेलमेंडर है फर्स्ट, दिस वन. सेकेंड इज राना. रानाटिक राना इज फॉर फ्रॉक. क्लास एम्फीबिया. As a name include, amphi means greater, amphi dwell, bios means life. So they have a dwell life. Amphibians aquatic भी होते हैं, terrestrial habitat में भी रह सकते हैं. Most of them have 2 pairs of limbs. Body is divided into head and trunk.
टेल में भी प्रेजेंट इन सम। द एम्फीमेस मॉइस्ट होती है, आईलिड्स होते हैं और एक टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into a common chamber called coelca, which opens to the exterior. Respiration by gills, lungs, and through skin. The heart is three-chambered, two auricles and one ventricle. These are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization external, they are oviparous and development is indirect. Example: bufo, toad, rana, frog, hyla, tree frog, salamander, ichthyophis, limblens, amphibia, chetophys. नेक्स्ट इज क्लास रेप्टेलिया। डायग्राम देख लेते हैं। रेप्टाइल्स के कैमिलियन, क्रोकोडाइल, किलॉन, नाजा। तो स्नेक और टर्टल और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो रेप्टिलिया में आते हैं। डू नॉट कंफ्यूज इट विद एम्फीबिया। ओके, आप सोच रहे होंगे पानी में भी रह सकता है और ये टोटोइस बाहर भी आ सकता है। स्नेक के लिए भी सेम है, बट इन रेप्टिलिया क्या अलग होता है हम पढ़ते हैं। द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रेफरी और रैप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। तो ये क्रीप या कॉल करते हैं, फ्रॉग क्रीप या क्रॉल नहीं करता, तो वह एम्फीबिया में इंक्लूड होता है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राइड एंड cornified skin, epidermal scales or scutes. They do not have external ear openings. Tympanum represent ear. Limbs when present are of two pairs. इनकी बॉडी में वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग के उसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड, इनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है यूजुअली, बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। ओके, लेकिन क्रोकोडाइल्स में एक्सेप्शन है कि फोर चैम्बर्ड होते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, क्रोकोडाइल बिग एनिमल्स होते हैं, उन्हें हंटिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो फोर चैम्बर्ड होते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स. स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्केल कास्ट. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. देयर ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं ऊपर, टर्टल, केलॉन, टेस्टुडो टोटोइस, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडैक्टाइलस, वॉल लिजार्ड जो हम घरों में देखते हैं। अगली बार वॉल दिखे तो कहना है, लिजर्ड दिखे तो कहना है ए हेमीडैक्टाइलस, कल आना। पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, बैंगेरस, क्रेट, वेपरा, वाइपर स्नेक। ओके, Class aves. The characteristic feature of ave birds are the presence of feathers. Most of them can fly except flightless bird, that is ostrich. Class aves, जैसा कि हमने पढ़ा, इनके फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। सारे फेदर्स होते हैं सब में, ऑस्ट्रिच के अलावा, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस होती है, फ्लाइटलेस। Hand limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oily gland at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified, bony, and the long bones are hollow with air cavities, pneumatic. इनमें खाली होती हैं इनकी हड्डियाँ. The digestive tract of birds has additional chambers. The crop and gizzard. Heart is completely four chambered. पूरा फोर चैम्बर्ड होता है, नो थ्री चैम्बर्ड. दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं. एग्जाम्पल, दे आर एबल टू मेंटेन दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन कौन से बॉडी टेम्परेचर. रेस्पिरेशन ये आप देख सकते हैं डायग्राम में. neophron, some birds. A. shrewd theo, पिस्टाकुला, पैरट को पिस्टाकुला कहते हैं, एंड मोर को पाओ. मोर को ऐसे वीट कुछ खिलाते हुए आप बोलना पावो. A. sex connected to lung supplement respiration. सेक्स से सेपरेट होते हैं, तोता तोती अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है.
ओविपैरस होते हैं यानी अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। जैसे कोरवस, क्रो, कोलम्बा, पिजन, जो ये आप हमारे एसी के ऊपर बैठे रहते हैं, कोलम्बस, पिस्टाकुला, पैरट, श्रुथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पिकॉक, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, नेफ्रॉन, न्यूफ्रॉन, वल्चर, अच्छा न्यूफ्रॉन कहते हैं वल्चर्स को, गिद्धों को। क्लास मैमिलिया, they are found in variety of habitat, polar ice caps, desert, mountain, forest, grassland and dark caves, कहीं भी मिल जाएंगे। किसी किसी को उड़ना आता है और किसी किसी को पानी में रहना। उड़ना बैट को। सबसे यूनिक फीचर है इनका कि वो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें, यानी दे कैन फीड द यंग वंस, दूध पिलाने के लिए। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरिंग, मिट्टी खोदने के, स्विमिंग या फ्लाइंग के लिए यूज़ होते हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, इनके पास हेयर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स ऑफ पिन्ना आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके जॉ में। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर होम्योथर्मस यानी वार्म ब्लडेड, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इंटरनल रेगुलेट नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपैरस होते हैं यानी यंग वंस को जन्म देते हैं, अंडे को जन्म नहीं देते, विद एक्सेप्शंस, जिससे एक्सेप्शन है प्लेटिपस, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, अंडे को जन्म देता है ये। एग्जाम्पल ओविपैरस, अभी ओविपैरस के एग्जाम्पल है जो अंडे देते हैं। ऑर्निथोराइंकस प्लेटिपस, विपैरस है मैक्रोपस कंगारू, टेरोडोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रैटुस रैट, अगली बार रैटुस पकड़ेंगे, कैनिस डॉग, फैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, सब में एस लग गया लास्ट में। एक्वस हॉर्स, डेल्फियस कॉमन डॉल्फिन, बेलरनप्टेरा ब्लू व्हेल, पाओ, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। अभी बहुत ही ब्यूटीफुल आपको ये दे रखा है बॉक्स, और इसके नीचे समरी है। समरी पढ़ के आपको बताना है आपको क्या समझ आया, और कोई डाउट हो तो। और बॉक्स को पढ़े तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास टाइम ना हो पूरा चैप्टर पढ़ने का तो आप बॉक्स पढ़ सकते हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, कोलम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और डिस्टेंडिंग फीचर्स। यानी इसमें अलग क्या है। पोरिफेरा फाइलम जो है, इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेरियस सिमेट्री होती है, फिलम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, सब एब्सेंट, सर्कुलेटरी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी, बॉडी विथ स्पोर्स एंड कैनाल्स एंड वॉल्स, तो पोरिफेरा। नेक्स्ट इज सिलेंटरेटा, सिनिडेरिया, level of organization tissue, okay, symmetry radial, xylem absent, segmentation absent, digestive incomplete, circulatory absent, respiratory absent, और सिनिडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं सिलेंट्रेटा में। नेक्स्ट इज टीनोफोरा, टिश्यू लेवल होता है, सिमेट्री रेडियल absent, xylem segmentation absent, digestive incomplete, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एब्सेंट, कॉम्प्लेंट्स होते हैं लोगों को मोशन के लिए। प्लैटीहेल्मिंथेस लेवल है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम शुरू होता है। बायलेटरल सिमेट्री, सीलम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेशन इनकम्प्लीट ही रहता है, एब्सेंट है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी, फ्लैट बॉडी सकर्स होता है ये। और नेक्स्ट इज एस्केल्मिंथेस, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री 2 भागों में हो सकता है डिवाइड, सीडोसिलोमेट होते हैं ये, एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन, डाइजेशन कंप्लीट होता है, वाओ पहली बार, सर्कुलर सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एब्सेंट, वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड होता है, जो वॉर्म होते हैं एस्केल्मिंथेस में आते हैं। नेक्स्ट इज एनालिडा,
Organ system bilateral, coelomate, segmentation present, सबकम्प्लीट सर्कुलर डिजीजेस प्रेजेंट, रेस्पिरेशन absent होता है किसमें, एनेलिडा. बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, तो रिंग्स के फॉर्म में होती हैं एनेलिडा. ऑर्थोपोडा, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सिलोमेट होते हैं, प्रेजेंट होता है कंप्लीट डाइजेशन, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी प्रेजेंट. एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जो हाथ पैर होते हैं जॉइंटेड होता है इनके. मोलस्कल ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सिलोमेट, absent, कंप्लीट होता है डाइजेशन, प्रेजेंट होते हैं दोनों सिस्टम. एक्सटर्नल स्केलेटन शेल में होते हैं मोलस्क के, ठीक है. इकोनोडर्मा ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री रेडियल होती है, सिलोमेट, सेगमेंटेशन absent, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी प्रेजेंट. वाटर वास्कुलर सिस्टम रेडियल सिमेट्री. हेमिकॉर्डेट ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सिलोमेट, absent, complete, present. Worm like proboscis, collar and trunk होता है. Chordates organ system present, bilateral symmetry just like us. Coelomate होते हैं, present, complete digestion, present, circulatory respiratory. Distinctive features are notochord, dorsal halo, nerve cord, gill slits with limbs of fins. So that's for all. Kindly share, like and subscribe my channel so that I can make more such videos. Thank you so much.